Yes, good evening to all. Today we will discuss about regular expression to DFA. Means a regular expression is given to you, and on the basis of the given regular expression, you have to design the finite automata, or you have to design the transition diagram of the finite automata. Right. So in the previous lecture, I already discussed you about the elimination of null moves. Means if there is any null transition in the diagram, then we have to eliminate this type of transition in any diagram, right? So there are only four steps to eliminate the transition diagram in the null transition from the diagram. For example, suppose there is a situation like this. Suppose this is these are two states, and you are moving from one state to another state by null transition or null input. So what does it mean? It means simply that you are directly moving from this state to this state without reading, without taking any input. Means the input is null, right? So that's why we have to eliminate the null transition in all the transition system or the transition diagram. So I already discussed you about the steps of removing the null. If anyone have any type of problem regarding the null elimination from the transition system, then please let me know. So should I move ahead, or I have to explain or I have to repeat null transition or elimination of null? Please give your feedback. Should I repeat the elimination of null transition, or should I move ahead from RE to DFA? आप आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रिया. ओके, थैंक यू. अदर्स प्लीज. वेरी गुड. देखिए, मैं अभी तक देख रहा हूं तो ज्यादातर वही लोग रिप्लाई करते हैं जिनको मैं रेगुलरली, जो लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना, कुछ पूछता हूं तो आंसर भी देते हैं. बाकी इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का होना चाहिए. अगर किसी एक को भी समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है ना. तो इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज आप लोग बता दें, है ना. ओके, ओके. चलिए नमन, तुम एक बार पढ़ो. बाकी सब लोगों ने कहा है कि कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं. आप आगे मूव करते हैं हम लोग. थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि आपने पूछा है तो बताना भी जरूरी है. बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं बेटा. if suppose null there is null transition between two states. Suppose first name of first state is v1 and name of second vertex is v2. Now you have to eliminate this null transition from between this v1 and v2. So first of all, you have to check the edges starting from second one vertex or starting from v2. मीन्स सपोज अगर ऐसी सिचुएशन है, यहाँ ए से आप यहाँ कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर आप सपोज बी से मूव करते हैं. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑल द एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम बी2. यहाँ से देखो कहाँ जा रहे हो. ठीक है, ये तो नल आपको हटाना है तो ये तो हट गया. नाउ यू हैव टू चेक all the edges starting from v2. So now there are two edges starting from v2 on the input a and b. So just duplicate it from v1. उनको कहां से डुप्लीकेट करना है आपको? b1 से, with the same input. Input क्या था यहाँ पर? a. Then just we duplicated by a, and here the input is b, so just duplicated by b, right? So these are basically two steps that are highly required in all the cases. And third and fourth are special cases. If v1 is initial state, then only we will make v2 as the initial state. And fourth one is if v2 is final, then only we will make the v1 as final. So in this case, no any state is the initial state and no any state is the final state. So in this case, there is no need to step number 3 and step number 4. Only step 1 and 2 can be applied. Is it clear?
third step is only third step can be applied only when the V1 state is the initial state. So in this situation, we will mark V2 as also the initial state. And fourth one is, if V2 is the final state, then we have to mark V1 as the final state. So these third and fourth step is purely associated with the initial state or the final state, while step 1 and 2 are compulsorily you have to apply, you have to use. So I think, Naman, now is it clear? Good. Very good. So now I am moving ahead. So see, now our objective is to find the DFA corresponding to the given regular expression. So just I want to before going to start this particular example, I would like to explain some small point. Like, suppose if I use this regular expression like 0 plus 1, right? So in this case, we will discuss later. And second one is, suppose 0 1. मैं इन दो की बात करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? First one is 0 plus 1 and second one is 0 1. So what is the difference between these two regular expressions? Can anyone explain? आप सिंपल एक लाइन लिख के मुझे बता सकते हो. 0 plus 1 and 0 1. I already drawn the diagram for the 0 plus 1 as well as 0 1. So on the basis of the diagram, clearly you can differentiate it. Very good. Simran, your answer is perfectly correct. Very good. Aishwarya, आपका आंसर भी 100% सही है. 0 plus 1 is union and 0 1 is concatenating. Very good. And Simran का आंसर था 1 means पहले वाले का मतलब हुआ 0 और 1 and second का मतलब हुआ 0 and 1. Very good. Very good. Very nice. One is union, second is concatenation. Megha, thank you. तो इसका मतलब आपको आता समझ आ रहा है. Very good. Now, if suppose I want to draw the diagram of this one, that is 0 plus 1, so how can we design the transition diagram for the same? So simply the meaning is, जैसे अभी आपने कहा कि either 0 or 1, right? So इसका मतलब ये हुआ 0 plus 1 means union, right? So इसका मतलब हुआ आप 0 से भी मूव कर सकते हो और 1 से भी कर सकते हो. Means just this plus sign can be considered as or, right? So इसका मतलब क्या हुआ कि suppose you are in any state like initial state and now you, after reading this 0 plus 1, you are moving to any other state. So it means that after reading 0, you can move from this one, or after reading 1, you can move from this place, yeah, from one state to another state. Means either 0 or 1. That is represented by 0 plus 1, and by diagrammatically you can see, you can represent this one, right? While 0 1 is the case of concatenation. The purpose and the meaning is you compulsorily you have to read 0, then you must use 1. Means suppose I want to draw the diagram of this 0 1, then clearly I can draw the diagram. That is, first of all, it read 0, and after that it will read, that is 1. It means that 0 and 1 both must be compulsorily read. Both must be compulsorily input. While in case of 0 plus 1, you can move from 0 or you can move from 1. Either 0 or 1. कोई भी input अगर आता है, you can move from one state to another state. So this is the diagrammatically you can see the basic difference between 0 plus 1 and 0 1. Is it clear to all? Yes, 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 Mansi, you are right. So any doubt, or is it clear to all? Very good, very good, very good. Thank you. So now
just I want to explain again the same thing. If 0 plus 1 is there, that means 0 union 1, that is 0 comma 1. एक ही बात होती है. 0 plus 1 is represented through 0 comma 1 at the time of the diagram. The meaning is same, either 0 or 1, and the diagram can be represented as 0 or 1, or simply you can also represent the same thing by using comma here. 0 comma 1, और इसकी भी दोबारा से जरूरत नहीं है. While at the time of 0 1, it is the case of concatenation. So in this case, first of all you have to read 0, and after that you have to read 1. P means both are compulsorily input, right? Both are compulsorily read by the machine. So this is the simple case of concatenation. Now there are two operations, as I already discussed. First one is the union and second one is the concatenation, right? And third operation is what? That is the iteration. Third operation is what? Iteration. So iteration means suppose A star. A star is what? A star shows the iteration of A. That can be represented as, with the help of the set, that is null. A iteration of A is 1, iteration of A is 2, iteration of A is 3, like this. So this is the meaning of A star. That is the iteration of A. So how can we represent this A star or iteration of A with the help of the transition diagram? So simply, suppose there is any A star between these two states. Suppose A star is any input, you can say that is, suppose A star between state Q1 and Q2, suppose, right? So if suppose A star is any input between two states, that is Q1 and Q2, then simply how can we resolve or how can we represent this thing? This is or simply original A1 and Q1 and Q2, and between this Q1 and Q2 just one additional state will be associated. The name of that state may be Q3 or whatever, right? So after that, just you must apply here null sign, null transition, and A in the loop. So this is the basic representation of A star. If, दोबारा बताता हूँ इस चीज को मैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है. If there is any A star means iteration of A between two states, then how can we represent this A star? In this case, take one more state, that is Q3, Q1, Q2, whatever, between the two given states, right? And take the loop of the input without any iteration. Means actual value क्या है इसकी? A star का मतलब क्या हुआ? Iteration of A, but actual input is what? Actual input is A. So just take the loop on A, and this new state is associated with the previous one and the old one by the null transition. So this thing can be represented in this form. So there are three types of operations. First one is the union, that is either or, and second one is the concatenation, that is compulsorily and first and second, and third one is the iteration. So how iteration can be added, how iteration can be represented? इटरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि दो स्टेट दे रखी हैं जिनके बीच में इटरेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट को बीच में ऐड करेंगे, है ना, इम्पोज करेंगे नई स्टेट, और जो भी इटरेशन है, ए का इटरेशन है, ए वन का इटरेशन होता तो यहाँ लूप पर क्या आता, वन, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे. और जस्ट अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जस्ट एलिमिनेशन ऑफ नल ट्रांजिशन, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस. तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? Q2 स्टेट की नीड क्या है? Q2 स्टेट तो दे रखा है ना बेटा आपको, Q1 और Q2 ये तो दे रखा है ना. कोई दो स्टेट मान लीजिए, Q0 Q1 मान लीजिए, जिनके बीच में A स्टार है. So in that case you have to add one more new state and apply the loop here. This is the basic rule, right? How this is the simple rule to represent the iteration simply. Simran, are you getting this point? ठीक है.
तो इटरेशन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। यूनियन में बता चुका, इटरेशन और कॉन्केटिनेशन मैंने आपको बता दिया। नाउ on the basis of the given rule, just try to represent the DFA or the transition diagram for this given regular expression. इस रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से आप लोग कोशिश करो कि इसका डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा, जस्ट कोशिश करो जैसा मैंने बताया अभी आपको। केवल 3 ऑपरेशन यूज होंगे। जस्ट यू हैव टू फॉलो ओनली 3 ऑपरेशंस, यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मींस इटरेशन। तो इसमें भी 3 ही ऑपरेशन है ना। उसी के बेसिस पर डायग्राम बनाइए, करिए फटाफट। I am giving you 5 minutes. Just you have to design a transition diagram with this transition diagram of this regular expression. और किसी का हुआ अभी? मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। एक बार आप लोग जैसा मैंने बताया उस तरीके से इस पे अप्लाई करो। जस्ट यू हैव टू अप्लाई ओनली 3 ऑपरेशंस। जस्ट ट्राई इट, otherwise I will explain you. Good. Riya, Aryan, Simran, very good. You have done this question. Good. Very good. दीपांशी, मेघा, 01 को ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, करो आर्यन बेटा, फिर अभी मैच कर लेंगे। मानसी, वेरी गुड। अदर्स प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड प्रतिभा, थैंक यू। मनीष, वेरी गुड। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं आया है मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in this subject, regular expression to DFA.
तो इन दिस केस क्लियरली स्टार्ट विद द स्केलेटन। मैं जिसको बिल्कुल नए सिरे से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो just try to write the design the skeleton that is started from the initial state, any given regular expression. Just you have to follow all the strings that that is given to you. This is between the Q0 and QF, and QF is the final state. Is it clear? So this is the simple designing, you can say, the skeleton design. This is the step number 1, you can say. Now you can clearly see that there are 3 parts of this statement of the given regular expression, and these 3 parts are concatenated to each other. So just apply, use one second in second step, 0 plus 1 star is applied in this part, and second one is the 0 plus 1 1, this one, and third one is the 0 plus 1 whole star. इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि कॉन्केटिनेशन है। जस्ट चेक द डायग्राम ऑफ 0 1। तो आपने क्या किया, फर्स्ट अप्लाई 0, then apply 1, and you are moving to the that point. So that is 0, that is 1. So in this case, this is the first part, this is the second part, and this is the third part. So first part is placed between initial state to intermediate state, that is suppose Q1, and second part is placed between Q1 and Q2, and finally QF is the last. If you feel any problem in this step, then please let me know. So it is clear. Now you have to bifurcate or decompose this one, 0 plus 1 whole state. It means that it is just similar as A star, right? So in this case, you know that this is suppose Q0 and this is suppose Q1, right? So between, I already told you that between Q0 and Q1, take one more state, right? And connected with null, clear? And apply, क्या लूप पर क्या लगाते थे, इस पर लूप लगा दीजिए और लूप पर क्या लगाएंगे, a मींस जो भी इसके अंदर एस्टिक के अंदर वाला पार्ट है, एस्टिक के अंदर क्या है, 0 plus 1. So 0 plus 1 can be represented as 0, 1. So this part is completely solved. Now another one is कि after reading this 0 0 plus 1 1, you are moving from Q0 to Q2. Is it right? You are moving from Q0 to Q2. Clear? So it means that suppose अगर आप इसको x माने थोड़ी देर के लिए और इसको क्या माने y. So what does it mean? It means that simply what कि x plus y, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, x plus y या a plus 1 का प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या था, और मीन्स यू आर मूविंग बाई x और यू आर मूविंग बाई y. तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 0 को रीड करेगा या क्या रीड करेगा, 1 1 को. मतलब या तो आप 0 0 को रीड कर लीजिए, दैट इज 0 0, और प्लस मीन्स और, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज, और 0 0 कैसे हैं दोनों, कॉन्केटिनेट, तो देखिए दोनों 0 0 हो गए, और या फिर आपको क्या रीड करना पड़ेगा, 1 1. नाउ इट इज क्लियर. इसमें कहीं भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. 0 0 1 1 वाली बात क्लियर हो गई. 0 0 1 1 वाली बात क्लियर हो गई है ना. अब नाउ फ्रॉम Q2 to QF, you can see here this is 0 plus 1 whole asterisk. It is just similar to A star. It means that for removing this iteration, just take an additional state and connect it with the previous one by null transition and apply the loop on किस पर, 0 plus 1, that is equivalent to 0, 1. तो ये अब आपका complete diagram बना. It is the complete transition diagram for the given regular expression. But in the given diagram, or you can say in the constructed diagram, you can see there are various nulls. There are a lot of nulls. This null, and here this is null, this is null.
These are the null moves or the null transitions. So you have to eliminate all these transitions, and finally you will get the finite automata. It may be possible that the received finite automata may be NFA, non-deterministic. So in that case, you have to convert it the NFA in the form of DFA. तो ये क्लियर होगा यहाँ तक. अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों के बीच में क्या करना है, नल को हटाना है. ठीक है, फिर उसके बाद इसके बीच में नल हटाना है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप बता देता हूँ. ये Q0 है, इसको आपने मान लिया Q कहाँ तक हो गया, 2 हो गया, तो इसको 3 मान लो. कहीं भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी स्टेट का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Q3, this is Q4, and suppose this is Q5, right? And this one is the Q6. अब मैं दूसरा कलर लेता हूं जिससे कि आप समझ में आएगा. हाँ ठीक है, आपको लाइक इसे समझ आएगा. देखिए, now just we have to first we have to remove the null transition between Q0 to Q3. So first of all, you have to find all the edges starting from this one. मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं B1 और इसको मान लेते हो B2, ठीक है ना, इसको B2 मान लिया आपने, तो मेरा एल्गो क्या थी, in case of algo the first step is find all the edges starting from B2. यहां से देखिए, एक क्या है 0 1 पर कहां जा रही है, Q3 पर, एक कहां जा रही है, Q1 पर, विद द इनपुट नल. सो जस्ट डुप्लीकेट इट फ्रॉम B1 से उसको डुप्लीकेट कर दीजिए. ये किस पर थी, नल पर, तो यहाँ नल कर दीजिए. ये किस पर जा रही है, 0,1, तो ये वाला तो नल हट गया, इसकी जगह क्या कर दीजिए आप, 0,1. इट इज क्लियर. The third step is check whether this V1 is initial. First state is the initial state. Yes. So make this second state as the initial. And step number 4 is check whether V2 is final state. Check करिए क्या ये दूसरी वाली state final है? No. So no need to apply step number 4. It is clear. Now you can apply. You can remove this null Q3 between Q3 and Q1. So find all the edges starting from Q1. मतलब दूसरे वाले से कहां जा रहा है. So we are going to Q4 and Q5. So just duplicate with previous one. That is पहले वाले से duplicate कर दीजिए 0, और यहाँ किससे जा रहे हो 1 से, तो इसको भी duplicate कर दीजिए 1 से, और ये हट गया. Right? Third step is this one is initial state? Yes. तो make this one as initial. इसको भी क्या बना दीजिएगा, initial बना दीजिए. क्या ये final state है? No. तो नो नीड टू मेक द फाइनल स्टेप, मतलब स्टेप 4 यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा. क्लियर हो गई बात. नाउ दिस इज वन नल रिमेनिंग. So this is suppose vertex B1 and this is suppose vertex B2, because this null transition is between Q0 and Q1. So again find all the edges starting from V2, मतलब सेकंड वाले से. So कहाँ जा रहे हो आप, Q4 पर जा रहे हो 0 पर, और यहाँ जा रहे हो 1 पर. तो जस्ट डुप्लीकेट इट बाई B1, पहले वाले वर्टेक्स से उसको डुप्लीकेट कर दीजिए, दैट इज 0, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, राइट, और ये आपका हट गया. क्लियर. तो इधर वाला पार्ट आपका पूरा हो गया. ये तीनों स्टेट आपकी कैसी हो गई, इनिशियल स्टेट, राइट. नाउ वी विल रिमूव दिस null transition. This is between Q2 and Q6. So now find all the edges starting from V2. यहाँ से देखो कहाँ जा रहे हो, 0 इस पर जा रहे हो नल पर, और यहाँ 0 1 पर हो, तो ये नल हट गया. और इसकी Q6 पर जा रहे हो 0 1 से, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया, और नल को यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया. इसमें समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, राइट. क्या ये इनिशियल है, नहीं. क्या ये फाइनल है, नहीं है, बात खत्म. नाउ इन दोनों को हटा सकते हैं हम चाहे तो, या इसको, जिसको भी आप पहले चाहते हो, Q2 और QF के बीच में हम हटा सकते हैं, राइट, QF. तो अब हम ये देखेंगे कि हम QF से कहां जा रहा है अगर इस नल को हटाना है तो. सो वी आर गोइंग टू एनी अदर प्लेसेस फ्रॉम Q2 QF, नो. तो अब क्या होगा, हम इसको डुप्लीकेट कहां करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कहीं जा रहे होते तभी तो डुप्लीकेट करेंगे. सो वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर एल्स फ्रॉम QF. सो नो, दिस विल बी रिमूव्ड and no duplication will be allowed here. No need to duplicate this one because we are not moving any other place, है ना. Because find all the edges starting from V2. तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं रहे, कोई एज स्टार्ट ही नहीं हो रही,
तो कोई डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है. Now check whether this is the initial state. Step number third. Is this initial state? No. So step number third will not be applied. And for fourth step, finally, check whether this V2 second vertex, second state is the final state. Yes, it is final state. So make this previous state is the final state. Clear हो गई बात? अब now this is the null between Q6 and QF. So again, try to find all the edges starting from V2. So there is no any edge starting from V2. So this will be removed and no duplication will be required. After that, check is this initial state? No. And step number 4, is this final state? Yes. So make this V1 vertex as the final state. So this state will be disconnected completely. And here you can see you are in state final state, and after reading 0 and 1 you are again in the final state, and after reading 0 1 you are again in the final state. So by seeing this example you can clearly see that we can impose this loop 0 1 here, and no need to this state. Means we can minimize these two states because both states are the final state, and on reading 0 and 1 as a input you are again in the final state. That means just we can impose the loop as 0 1 in this state. So no need to write this state again. And similarly you can see here, as we know that there is only one initial state in the transition system, but in this case you can see this is the initial state, this is the initial state, this is the initial state, and on input 0 you are moving on the initial state, or on 0 you are moving to Q4, or 1 you are directly moving to Q5. So just combine these three states as the initial state, right? And these two states as the final state, and these two states are the intermediate state. So finally you will get the answer in this way. See, अब मैं आपको स्टार्ट से दोबारा से बता रहा हूं. इनिशियली आपने क्या किया? Just we will design the skeleton between Q0 and QF clearly. Now just it is the concatenation of three strings. So just write all the strings in this way. This is the complete process to solve the regular expression to finite automata, right? So now just try to solve this one. 0 and 1 मैंने क्या कहा था, स्टार होगा तब नल अप्लाई करेंगे और एक नई स्टेट अप्लाई करेंगे बीच में, और 0 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0, 1. And similarly in this case this is 0 0 + 1 1. It means that either you can move by 0 0 or 1 1. So if you write this one, this is 0 0 and this is the case of 1 1. इसकी कोई ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत है. And second one is this is 0 + 1 whole stick. It means between Q2 and QF you have to take a new state, that is कोई भी नाम जो भी आएगा, and that is 0, 1. ये आ गए यहाँ. Clear? Now you can see when we remove the null between this one, तो मैंने पूरा करके दिखाया था. Just you have to follow all the steps of null elimination, and finally after eliminating null you will get this transition diagram. So in this diagram, by this diagram you can clearly see that on 0 you are moving to Q3, as well you are remains on the same state, that is Q0, and similarly for 1 input you are remains on the same state, that is Q0, or you are moving to state Q4. That means the given problem is what? This problem is NFA, but we have to find the DFA as per the given regular expression. So just convert the given NFA, this NFA, particular NFA or received NFA, in the form of DFA. So finally that will be the answer. Is it clear? Now अब clear हुआ कुछ बेटा? ये NFA, अगर ये DFA होता, suppose ये नहीं होता यहाँ पर, so this will be the final answer. But unfortunately this is NFA, right? So you have to convert this NFA in the form of DFA. Then only you can say that we can this is the final answer for the given regular expression. So after converting this NFA, you will find the DFA in this form. So this is the complete you say this is the complete just a minute, this is the complete DFA
as per the given regular expression. So first of all, start with the skeleton and divide the given string in the proper format. If null is encountered, then remove the null, and if NFA is achieved, then try to remove the non-deterministic non-determinism by conversion from NFA to DFA, because finally you have to give the answer in the form of DFA, deterministic in form. That's why you have to convert the non-deterministic problems into deterministic. So this is DFA corresponding to the given regular expression. तो जिन लोगों ने कर लिया था वो लोग मैच कर सकते हैं, और इसी तरीके से एग्जाम में करिएगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप बता देंगे तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे, बट आप इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस हमारे नेट पर, हमारी बुक में, हमारी स्लाइड से, जहां से भी आपको कॉपी करने को मन करता है आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से करें जरूर। सो फॉर टुमारो और द नेक्स्ट लेक्चर, just note down the question, that is 10 plus 0 plus 11 0 asterisk 1. Just find the DFA corresponding to the given regular expression. इसको आप लोग जरूर करें, जिससे कि आपको पता लगेगा कंसेप्ट कि आपको कितना समझ में आया है। तो just note down the question and find the DFA from the given regular expression. अगर आपका लिखा है find the finite automata from the given regular expression, it means that you have to find out the deterministic finite automata. If NFA is encountered, then you have to convert it in the form of DFA. Is it clear to all? अब जरा मुझे बताइए आप लोग मैसेज के थ्रू, समझ आया? इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड, गुड। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए। वेरी गुड। हाँ रिया बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोसेस के बाद एक स्टेप जरूर दिखाएंगे, है ना? उसके बाद आप डायरेक्ट कर लेना 0+1 को लूप में लगा के 0,1। अल्टीमेटली मतलब वही है इसका, बट वी हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बिकॉज वी आर ऑटोमाइज, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द मशीन दैट यू हैव टू फॉलो द ऑल द स्टेप्स। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू ऑल, वी हैव टू फॉलो ऑल द गिवन स्टेप्स, राइट? डायरेक्टली मतलब उसका यही है, लेकिन हम लोगों को पूरा डिटेल में करना है, देन वी हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, गुड, थैंक यू। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कल हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।